Good afternoon, all. Welcome to the Nigam Educationary. Is audible ଅଛି voice na? Just question sir. Active passive video is enough for any questions in exam. पिले हाँ मु तुमको आ गोटे कथा भी कहि दोची जोन सब एबे लाइव रो अछ कनेक्टेड अछ तो प्रॉब्लम पॉइंट ना काली ठो एक्चुअली हम स्टार्ट करबा थला सब वीडियो गुडा को चैप्टर वाइज ग्रामर सब नै के आस्थांदी किंतु जेतु देहटा हटा खराब हेला तो काली मु क्लासेस अधारो बंद कर देथि तो मु एबे भाबिछि कि तमरो जहाँ भी सब चैप्टर्स बाकी अछि तो चैप्टर वाइज आउ वीडियो एबे आसीबो नाही माने एमसीक्यूज पढुथि चैप्टर वाइज नै के आसी कहि तो चैप्टर वाइज आसबोनी तो एबे हम कोन करबा ना जेते सब तमरो बीएसटी अछि पेपर गुडा को जो वेरी सिमिलर टेस्ट हम सब अछि ताकू हम सब प्रैक्टिस करबा क्षेत्र जो एमसीक्यूज अछि प्रोज पोएट्री स्टोरी देन तमरो ग्रामर देन से जहाँ भी अछि तमरो डिक्शनरी स्किल बा प्राइस ऑफ पॉल्यूशन रो जो टाइप क्वेश्चंस आसीबो ताकू हम डिस्कस करबा ठीक अछि तो ताकू ही हम आज स्टार्ट करबा और चैप्टर वाइज हम कहू तुम जो प्लान देथि मु चैप्टर वाइज MCQ जाने ପାଇଁ ସେଟା ପସିबଲ ହେଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଥିଲେ आई एम सो सॉरी बट प्रोज पोएट्री स्टोरी रो सब जिनिस आसातला तुम ताको देई देखि परिबो ठीक अछि तो ठीक चलो स्टार्ट करबो तो मु तुमको गोटे एबे स्क्रीन शेयर करबी जोथे कि तमे कोन करबो ना आंसर शो दबो आंसर 10 सेकंड भीतर दाउ ट्राई करबो देन मु तुमको ताको एक्सप्लेन कर देबो ठीक अछि प्रोज पोएट्री स्टोरी ऑफ प्राइड लागा देखियो ताको मु बेसी एक्सप्लेन करबी ग्रामर को मु बेसी एक्सप्लेन करबी तो स्टार्ट करियो ओके ओके देखो तुम जेन कहतली कोन ना सो मॉडल सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस हम करबा किछटा सेट मु लेके आछि जोथे कि प्रोज पोएट्री स्टोरी ग्रामर डिक्शनरी स्किल प्राइस ऑफ पॉल्यूशन से को टाइप ऑफ क्वेश्चंस आसीबो ताकू लेके ही हम डिस्कस करबा हैला ओके प्राइस ला आछि ग्रेड वॉइस ठीक से ऑडिबल अछि तो ओके तो चलो स्टार्ट करबा तो देखो हम ग्रुप ए फर्स्ट डिस्कस करैतिले ग्रुप ए रे कोन देखि देखो ग्रुप ए रे फर्स्ट से कहि जे मु जो क्वेश्चंस के लिए कहबी ताकू ही तो आंसर दबो होला अनन गोटे आंसर करिबी तो फर्स्ट देखि देबा हमरो ग्रुप ए रे जो तबर अछि प्रोज पोएट्री स्टोरी थाए तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देखि देखो कहछि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन जो ऑप्शन दा देछि ए फर्स्ट फर्स्ट जो को मु जो सर्कल बुलोछि तार आंसर को व्हाट इज मॉन्टे कार्लो फेमस फॉर मॉन्टे कार्लो कोड ପାଇଁ फेमस ଥିଲା क्लब ପାଇଁ ना बार ପାଇଁ ना म्यूजियम ପାଇଁ ना कैसिनोस ପାଇଁ 10 सेकंड भीतर आंसर दबले माने समय बहुत कम अछि आ हम सब क्वेश्चंस भी देखियर अछि ओके तो एक्चुअली देखो मॉन्टे कार्लो होची गोटे फेमस टाउन दा जो कि गैम्बलिंग गेम बा कैसिनोस ପାଇଁ बेसी फेमस होला तो एटा डी टा ठीक अछि डी हेबो कि देन देखिए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि
in the merit list देखो prose part कौन देखी in the list of the new boys the writer's name was two from the bottom because dash यार आंसर दियो क्वेश्चन नंबर डबल 8 सेकंड 10 सेकंड तो मुझे 10 सेकंड में आंसर दो देन मैं तक कंटिन्यू करूंगा in the list the new boys the writer's name was two from the bottom because dash fourth point writer को नाम तले पड़ता अच्छा सौम्य रंजन पंडा क्वेश्चन की ए सुशील क्वेश्चन की सी हो एक्चुअली सी का ठीक है वो हिज नेम बिगिन विथ एन एस जन ता नाटा एस टू स्टार्ट होतला आ एस तो जदम लिखिबा एस टा सब लास्ट को आसुची तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे जेहेतु थिला सब जिंस तो तांकर नाटा लास्ट होतला देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछिले देखो क्वेश्चन नंबर 3 एठी कोन कहछि देखो मु जोटा सर्कल बुलाउची ताकू ही करियो बोले हला ताकू ही आंसर दियो who threw the breadcrumbs to the sparrows before the grandmother's corpse was carried off for cremation. এটা কোন आंसर दे दियो the writer's father he actually breadcrumbs देते breadcrumbs किए देते से sparrows मन को writer का father writer का mother writer himself now one of the servants. अच्छा पिछला क्वेश्चन बी है आंसर करेगी अच्छा बी पिछला क्वेश्चन आंसर बी है तो ठीक अछि बिले बी देखो कोन कहै छी राइटर्स मदर आ हां राइटर को मां ही देतले बी था ठीक आंसर बी हैला तो नेक्स्ट देखिए पिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ कोन कहला फोर्थ कहै छी डाइवर्सिफाइंग टास्क इंक्रीज वर्कर्स डज एरा मैजिक ऑफ टीम वर्क क्वेश्चन करले मैजिक ऑफ टीम वर्क क्वेश्चन दा आंसर देटा कोन हबो से कहै छी डाइवर्सिफाइंग टास्क इंक्रीज डज honesty and sincerity na self-esteem and motivation na punctuality and responsibility na interest and enthusiasm diversifying task increase workers task eta magic of teamwork answer ta b ekdam ठीक सौम्य एकदम ठीक b है ठीक आंसर सेल्फ एस्टीम एंड मोटिवेशन b है ठीक आंसर देन देखिबो फोर्थ कोन दिसले देखो सॉरी फिफ्थ देखिबो एटा कोन कहै देखो why did the Japanese came to India India को जापानीज मैन कोड पे आसले रीजन कौन थला कोड पे आसले ए देची टू सेट अप कॉलोनीज बी देची टू डेवलप द मारुति सुजुकी कार सी देची टू एनहांस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान डी देची टू इंप्रूव कमर्शियल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज कोड आउट ये सब जिंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर साइछन तो बी था ठीक आंसर टू डेवलप द मारुति सुजुकी कार को डेवलप करे पे सब आसले देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिछि 6 देखो 6 पहला Peter Gilligan knelt and expressed his gratitude to God when the poor man's wife said Peter Gilligan जो आंधी परिगण को एक्सप्रेस करथिले बा प्रे करथिले ग्रेटिट्यूड देखेथिले कृतज्ञता देखेथिले टू गॉड भगवान को when the poor man's wife said poor man wife को कथा रे कहला परे poor man wife को कथा रे कहला परे से ग्रेटिट्यूड देखेथिले ए देछि कोन he turned and died as merry as a bird ना तमरो बी देछि देखो father you come again ना देछि he died an hour ago ना I have no rest nor joy nor peace कोटा हो ठीक आंसर कोटा हो क्वेश्चन देला कोन ना Peter Gilligan knelt and expressed his gratitude to God when the poor man's wife said that ओ कथाटा कहला पर अच्छा सुशील क्वेश्चन ए हेबो एकदम ठीक एटा ठीक हो कोन पे कहछु सुनो इदान कहला फादर यू कम अगेन ये एटा कहला परे पीटर गिलिगन कोन पीटर गिलिगन देखला परे सीक्वेंस वाइज एटा कहिथिले ठीक अछि बट तापर से निजरो ग्रेटिट्यूड देखि नथिले जेते से जानले कोन ही डाइड एज मेरी एज अ बर्ड से कहले कि से गोटे माने से बहुत शांति रे मरछन बोली कहला सेते बेले से निजरो ग्रेटिट्यूड देखले गॉड को हला तो एटा हो एटा देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिले अब मु एटा को बेसी एक्सप्लेन करन दिले ना ऑलरेडी आमे सब जिंस को चैप्टर वाइज कर सारथिले आ जेहेतु मु ग्रामर रो चैप्टर वाइज वीडियो आनी पालेनी तो मु एबे खाली ई सेट उडाई तमरो प्रैक्टिस करबी जोरा कि हम यदि प्रैक्टिस करछ तमरो से एतो क्वेश्चन आसी हला देखो एटा कोन कहछि व्हाट डज फ्लॉक रेफर टू इन द एक्सप्रेशन हाफ हिज फ्लॉक हाफ ऑफ हिज फ्लॉक जो थिला एरो अर्थ कोन थिला ए कोन दिस देखो ए देछि a flock of sheep gazing near the church
माने गोटे मेंढा द्वारा गोटे दल से माने गेज करथले ग्रेजिंग करथले ना देन आगुन कोनला द डेड बॉडीज बuried in grave ना सी देछि swarm of insect flying at dawn and dusk ना डी देछि the members of Gilligan's parish कोड अब ठीक आंसर दे देखिए सुशील क्वेश्चन डी हेबो अच्छा आउ की कोन कहू बिरासनी क्वेश्चन डी हेबो एकदम ठीक सुशील एकदम ठीक बिरासनी जस्मिन भी क्वेश्चन डी हेबो एकदम ठीक डी हेबो ठीक आंसर डी हेबो ठीक आंसर कोन पई फ्लॉग एक्चुअली गोटे मेटाफर बुझो नै फ्लॉग ता रेफर करछि मेंबर्स ऑफ गिलिगन पैरिश बा पैरिशनर्स मान को एटा रेफर करछि हैला ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहछि देखो द पोएट डज नॉट एग्री टू द स्टेटमेंट डैश पोएट ए भितर जदि हम देखिबा एटा सम ऑफ लाइफ होला कि सम ऑफ लाइफ ए भितर को स्टेटमेंट टा को पोएट एग्री कर नथिले ए देछि कोन ए देला let the dead past bury its dead b देछि life is real and life is honest c देछि life is but an empty dream ना d देछि be a hero in the stride अच्छा लिपु क्वेश्चन सर आपन के हेल्थ केमिति अछि भलो अछि बाबा काली पई माने मते बहुत खराब लागुछि कि तुमको कहितली चैप्टर वाइज सब नै के आसी कहि कि ग्रामर गुडा बट आनी पालेनी देहडा हटत कि माने बहुत खराब लागला तो जानथो काली हमें अदर क्लास बंद करे पड़ला तो एबे हमें केवल हमर सेट ही प्रैक्टिस करियो जो थ्री ग्रामर भी रहिबो मैं एक्सप्लेन करबी ग्रामर पोएट्री स्टोरी डिक्शनरी स्किल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ए सब को हम बेसी फोकस करियो हैला अच्छा क्वेश्चन या भीतर क्वेश्चन आसी गबा तो देखो क्वेश्चन कोन आसी जवा नहीं बट एटा डिपेंड कर तुम यदि आको प्रैक्टिस करछो तमरो गोटे माने आईडिया पड़ेसो कि क्वेश्चन कोटे आसुची बुझो ना आवश्यक मेल आसी पर सर पैसेज आसीबो कि पैसेज आसीबा तो लिखा जाईची बट कोन हो जाने दिन ओरे एग्जाम रे साइंस लेबो हरेन कला तो तमर कोन कर जाना नहीं बट मते लागुची मु सियोर अछि आसीबो पैसेज हैला तो कोएटा कोन होबो द पोएट डज नॉट एग्री टू व्हिच स्टेटमेंट को स्टेटमेंट को से राज्य ही ना कोटा सी होबो ठीक आंसर एकदम ठीक सी होबो ठीक आंसर कि लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम जने लोक मन जो कोन लाइफ इज नथिंग लाइफ इज वैल्यूलेस तो सेटा को से एग्री करना दे स्टेटमेंट हैला तो देखिबा नेक्स्ट कोन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन अ प्लेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन ए जो चारटी ऑप्शन देछि या भीतर कोटा कोटा गोटे प्लेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन को देखौ छी गोटे प्लेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन देखौ छी ए देला फेरीलैंड बी देछि फैंटेसी सी देछि एन इडियोटिक थिंग डी देला ए लॉट ऑफ घासली जंप जल्दी आंसर दियो Which of the following expression mean a pleasant imaginary situation? Pleasant imaginary situation कोची देखो pleasant कहला और imaginary situation कहला एटा erotic thing जमान भी नो fairyland भी नो जन एटा ଗୋଟେ fantasy हम कहि परिबा जने ଗୋଟେ fantasy बी टा ठीक आंसर बी हला तुम दिन से इमेजिन करी खुशी ही जाओ ताका हम कोन fantasy बुझला तो ओके तो देखो नेक्स्ट कोन कहछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि there is dash for money in the world there is dash for money in the world कोन हबो a vast collectiveness sorry कोन कहछि vast collective madness b देछि a real tremor ना c देछि wild excitement ना d देछि a sharp feeling of pain there is dash for money in the world world de टंका को नेकी कोन अछि tremor wild excitement a sharp feeling of pain but poem रो लाइन आंसर कोन हबो शक्ति कौशल की ए हेबो एकदम ठीक शक्ति वास्ट कलेक्टिव मैडनेस जने लोक भीतर गोटे पागल मस टंका को नेकी एटा हो ठीक आंसर हैला तो नेक्स्ट देखिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप वाज रिटन बाय डैश कहा द्वारा मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैप का लिखाई छी आरके नारायण ऑस्कर वाइल्ड ना लियो टॉल्स्टॉय ना मनोज दास कोड ऑफ ठीक आंसर मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप वाज रिटन बाय डैश पिला डी कहले एकदम ठीक जगदीश क्वेश्चन बी हेबो अच्छा बी नो बाबा डी हेबो हला मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप लेखछंती मनोज दास डी टा हो ठीक आंसर डी हला देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हु गार्लैंडेड द मिनिस्टर एट द फर्स्ट वेलकम आर प्रथम वेलकम आर के जने तो मिनिस्टर को किए फूलमाला देथि द नरेटर सी महाराणा ना सी महाराणकर मिस ना द विलेज हेडमैन कोड हबो जल्दी आंसर दियो तुम 10 सेकंड भीतर आंसर दबो काई ना हम जल्दी फुन ग्रामर सेक्शन को दिबा
ग्रामर टाको हम डिस्कस करे पड़िबो देवाशीष कहउछन बी श्री महाराणा एकदम ठीक बी श्री महाराणा ठीक आंसर श्री महाराणा आ मन रखिबो स्टेज ऊपर की देथिला स्टेज ऊपर की देथिला स्टेज ऊपर देथिला श्री महाराणा को निस हला फुलमाला देथिला जे कि गोटे लोन हाई स्कूल एजुकेटेड गर्ल थिला किंतु तमरो वेलकम आर्क पाखरे श्री महाराणा ओके देन नेक्स्ट जीवा प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन कहइछले मेजर मोरिस वाज अ हेवी मैन with dash eta book line da tomoro Major Morris was a heavy man with a dash a deichi kon a deichi tomoro fair complexion dark complexion b deichi ruddy complexion deichi unique complexion what habo c ekdam thik c habo thik answer the book term da then next question kon deichi Charlie Chaplin made his first appearance on the stage at the age of dash ko age re Charlie Chaplin निजर कोन जो माने डेब्यू करथले जो फर्स्ट टाइम पाइन परफॉर्म करथले स्टेज ऊपर 4 5 6 7 कोटा 4 ना 5 ना 6 ना 7 मेहता क्वेश्चन बी है वो एकदम ठीक बी है वो ठीक आंसर बी दा हेलो तो नेक्स्ट देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन कहछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग is known as dash eta tamara stay on the state list asla question acha mo voice किछ सुबुत करले अच्छा I hope सुबुत हो ठीक से कोन कहछि the art of producing beautiful handwriting is known as dash eta कोन कहछि बोतला सी क्वेश्चन कैलिग्राफी एकदम ठीक कैलिग्राफी क्वेश्चन त कोने बोल तुम भाबुचो बट से न बोले भाबुचो की देखो बुझा गो कोन कहछि ना तो आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कोन कहछि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज नोन एज डैश टाइपफेस माने कोन टाइपफेस कहछि विंडोज तो जमा हबनी कि टाइपोग्राफी तो भी जमा न तो टाइपफेस जो अछि आ कैलिग्राफी देछि न कि तो तमर टर्म भितरे पिला कंफ्यूजन कोन टाइप जो तमर पड़िबो टाइपफेसेस पड़िबो आ कैलिग्राफी ए दुटा ऑप्शन भितरे पिला कंफ्यूज हेलो तो बट तुम बुक रे देछि हां तुम जो बुक रे देछि तुम देखिबो तुम वर्डिंग सेक्शन में देथिबो एटा कैलिग्राफी कोटा कैलिग्राफी होची गोटे माने एमपी गोटे माने कोन जो सुंदर सुंदर अक्षर रो टाइपफेसेस यूज करी जोटा हम लिखन कैलिग्राफी क्वेश्चन हैंड रिटन इज नोन एज कैलिग्राफी तो सीधा ठीक आंसर सी हला तो बेरे बेरे टाइपफेसेस आउ कैलिग्राफी के भीतर पिला हम कंफ्यूज हो जांते हम टाइपफेस होची माने कोड यूज होतला टाइपफेस जो कंप्यूटर यूज होची ना टाइपफेसेस रोमान आसुची कौन सब आसुची ना बहुत प्रकार अक्षर स्टाइल ताको टाइपफेसेस कोची ना और जोटा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हाथ रे लेखा होतो ता कोन कोछंती कैलिग्राफी हैला तो कंफ्यूज हो ना ओके तो नेक्स्ट देखिबो एबे हमर सरी गेला पोएट्री स्टोरी पार्ट रो किछिटा देन एबे हम देखिबो से सेक्शन ए रो हमर क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहछि देखो सेकंड क्वेश्चन कोन कहछि चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन जो ऑप्शन देछि तार तो मध्य हमको ठीक आंसर को अच्छा सुब्रांत क्वेश्चन सर प्राइस ऑफ पॉलिसी नो वोकल स्केल हां एथि ही परियतला हैला सुब्रांत एथि ही हबो आगो एमसीक्यू को डिस्कस कर दिबा टोटल जाकर डिस्कस करबे तम क्वेश्चन देखो टोटल डिस्कस करबी जोति कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करबन केवल एमसीक्यूज डिक्शनरी स्किल्स आ तमरो कोन जो हा अछि ग्रामर ग्रामर पोएट्री स्टोरी दो आ तमरो प्राइस पॉलिसी जो डिस्कस करबो हैला तो को फर्स्ट ग्रामर सेक्शन रो द चीफ मिनिस्टर डैश द हर्बल मेला नेक्स्ट मंडे एटा कोन हो देखिए कि आंसर दोचो कि फर्स्ट पेज कोन द चीफ मिनिस्टर कोन कहछि डैश द हर्बल मेला नेक्स्ट मंडे कहले प्ले नेक्स्ट मंडे कहछि ना तो कोड कोन देखौछि फ्यूचर को देखौछि जरा देखियो नेक्स्ट मंडे कोन देखौछि ना फ्यूचर देखौछि तो से अनुसार कहयो कोनटा होय अच्छा किछिला क्वेश्चन सी किछिला क्वेश्चन डी द चीफ मिनिस्टर डैश द हर्बल मेला नेक्स्ट मंडे चीफ मिनिस्टर कहला ये तो चीफ मिनिस्टर देखो एठी एक्चुअली जदि हम कहबी is going to inaugurate by is inaugurating out अछि will inaugurate out अछि inaugurates हैला कि एठी हम देखिबा will inaugurate ता एते ठीक लागिबोनी कोन पय ना एटा ओटा ऑफिशियल इनसु देखौछ हैला तो बाकी रहला is going to inaugurate एटा मतलब ठीक लागिबोनी कहना is be going to हम कोड यूज करथि be going to हम सेठी यूज करथि जोटी कोन हमर किछि गोटे
एविडेंस देथिबो तो सी एविडेंस देई नेछि तो बाकी रहला दिटा जिंस बी आ सी ए दिटा को ठीक हे परबो होला कि पॉसिबल अछि दिटा को ठीक हे परबो किंतु बेसी ठीक लागु देछि कोनटा इनागुरेट्स एमे एटा ऑफिशियल टाइम को देखो जो कैलेंडर टाइम को देखो कि एटा एना हबार अछि कोइ होला तो से अनुसार आमे दिटा ठीक कर परबो तो चीफ मिनिस्टर तो हम घर लोक न से ऑफिशियल जिंस ओडा ही माने ए करिवे इनागुरेट करछन तो ताने कोन आगु प्लान हे सारी छी एटा तो एटा बी हो होला बी हो ठीक आंसर ओके देखो नेक्स्ट कोन कहछि महात्मा गांधी dash to South Africa in 1893. Second question. वो आंसर कौन होगा? महात्मा गांधी dash to South Africa in 1893. Went देची, had gone देची, was going देची, how has gone देची. कौन होगा? देखो एटा देखो जी past time देखो मु तुमको रूल गुडा को सब बुझे दी होला past time देची 1893 अच्छा किछि पिला सी कोछंती किछि पिला बी कोछंती देखो टिके बुझी जाओ तो जहा कहूची से अनुसार तुम करियो जेहेतु 1893 कहला एटा पास्ट टाइम देखौची बुझा नै पास्ट टाइम देखौची आ जेहेतु पास्ट टाइम पिले देखौची पास्ट टाइम रे जो प्रेजेंट यूज हबो बुझा नै तो जदि हम देखिबा तमर कोन सबुरा अवश्य पास्ट रो अछि बट हैज गॉन ता कोड यूज हबो बा प्रेजेंट परफेक्ट कोड यूज हबो जोटी टाइम ता स्पेसिफिक देई नथबो बट टाइम ता स्पेसिफिक देइची तो सेति पे हम एठी कोन यूज करिबा पास्ट सिंपल यूज करिबा पास्ट सिंपल यूज करिबा हला तो एटा हो ठीक आंसर तुम एटा जाने अब हार्ड गन जो मन को जो हार्ड गन एथि पई हबन तिले कारण हार्ड गन छेतले थांदा जदी दीटा एक्शन दे थांदा आ कहै ना गोटे एक्शन सरिया पूर्वरु ऑलरेडी आउट एक्शन ता सरी सारथिला जदी ए कथा से कहि थांदा ताल तमे ठीक हार्ड गन ता कहि परथिन हला तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन थर्ड टा कंडीशन देखो थर्ड कोन देला थर्ड कहछि यू कैन नॉट सी द मैनेजिंग डायरेक्टर ही डैश टिल you cannot see the managing director he dash still एरा देछि एरा आंसर कोन हो you cannot see the managing director he dash still still लागिछि देखो still लागिछि यदि still लागुछि आ cannot लागिछि cannot मान प्रेजेंट देखौछि ना कोन देखौछि प्रेजेंट देखौछि तो से कोन you cannot see तमे मैनेजिंग डायरेक्टर को देखि परिबो नाही कारण से सोउछंती still लागिछि माने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज कर दो हैला तो बी राव ठीक आंसर से एबे जे सोउछंती सी ही इज कोन स्लीपिंग स्टिल हैला बी राव ठीक आंसर एकदम ठीक तो मन रखथबो स्टिल लागिछि माने प्राय से कोन हो मोर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही लागियो स्टिल लागिछि ना प्रेजेंट टाइम देखौछि तो देखो नेक्स्ट वन कहछि एडिस डैश कॉज डेंगू मे ना विल ना शुड ना कैन कोड आंसर एडिस डैश कॉज डेंगू देछि देखिए कि आंसर दोचो फोर्थ रो देखि छिला बी को शक्ति क्वेश्चन बी हेबो स्वप्नेश्वर क्वेश्चन बी हेबो जूली क्वेश्चन बी अच्छा बी डी भितरे प्राय पिला कंफ्यूज अछि देखिबा कोन देछि बी आउ डी भितरे पिला कंफ्यूज अछि देखो एठी जदि हम देखे एडिस कोन हो जो माने हां डैश कॉज डेंगू तो जदि हम देखिबा ए जो मशाटा कोन काम डेंगू होबा पॉसिबिलिटी अछि ना पॉसिबिलिटी अछि कि देखो एटा जनरल पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी एटा पिले एटा तमर जनरल पॉसिबिलिटी और जदि जनरल पॉसिबिलिटी पिले थिबो बुझ नै तो से जगह हम कोन करबा कैन यूज करियो हैला कैन यूज करियो जदि जनरल पॉसिबिलिटी आ मे होची स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी मेटा कोन स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी मन रखियो एटा मो मॉडल्स ऊपर वीडियो आनि सारची तुम जेटा को देखि परिबो एटा हो डी आंसर हो कैन हो जदि मु कहबी मरुभूमि रे ऑटो कोन पानी न पेकी बहुत दिन बंच परिबो तो एटा एबिलिटी देखौची जने एबिलिटी किबा तमर पॉसिबिलिटी पई जनरल एबिलिटी बा जनरल पॉसिबिलिटी पई हमें कैन यूज करियो हैला तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि व्हाट डज लुक ओवर मीन लुक ओवर माने कोन दियो लुक ओवर माने कोन जल्दी आंसर दियो ए फ्रेजल वर्ब्स माने कोन लुक ओवर लुक ओवर माने कोन ए देछि टेक केयर ऑफ बी देछि रिमेंबर द पास्ट सी देछि इन्वेस्टिगेट डी देछि एग्जाम क्विकली देखिए कि कोन आंसर दोचो स्वप्नेश्वर क्वेश्चन बी हबो लुक ओवर कला लुक ओवर
शुभ्रांति क्वेश्चन बी एसडी हां एसडी एडिट अच्छा आंसर दियो जूली क्वेश्चन बी हबो देखो जदि हम क्वेश्चन लुक ओवर मन रखबो एटा होची एग्जाम एग्जाम कोन गला एग्जामिन क्विकली जो क्विकली एग्जामिन करते कोन करो लुक ओवर बुझा नै लुक ओवर क्वेश्चन टेक केयर ऑफ हबोनी कि इन्वेस्टिगेट हबोनी ला किबा रिमेंबर द पास्ट मध्ये हबोनी डी हबो ठीक आंसर डी तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि 6 कोन कहले देखो द वर्कर्स have dash their strike এটা কোন হবো the workers have dash their strike called off called off called off called on ভি এটা called off called off এটা তো ঠিক লাগুনি এটা জমা ঠিক লাগুনি হলা এটা এই দিনতে দেখো called off called on এই তিনটা একটু পড়া হবো स्वप्नेश्वर क्वेश्चन बी हबो आ कि कोन कहजो देखो तुम तो कहजो कॉल्ड ऑफ माने सब तुम का फोन करजो कि तुम पर किछ सामान आसला बट इट कॉल्ड ऑफ है ठीक हो तने से कोन कहले ना से तांकर कॉल्ड ऑफ मान देखो जैसे स्ट्राइक बिषय कहछ ना तो वर्कर्स हैव कोन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक ता माने सुन कैंसिल कर कोन कहले भी कैंसिल कर एटा मन रखियो एटा के माने कोन सुन कैंसिल कर तांकर कोन स्ट्राइक तो कॉल्ड ऑफ ठीक हो आ कॉल्ड ऑफ ता इतने बोलबो कने सीधा ग्रामेटिकल ठीक न कॉल्ड ऑन आ कॉल्ड ऑफ दे कॉल्ड ऑन माने कोन सब तुम बोले माने मीन्स ऑफ विजिट हम कहि परिबा हैला किबा सपोज कोनटा रिक्वेस्ट तुम करतो किछि गोटे सेटा मीन्स अछि कागुर किछि कहया पे रिक्वेस्ट करतो कॉल डाउन सेटा कहि परिबा बट कॉल्ड ऑफ माने कैंसिल कोन रखियो कॉल्ड ऑफ माने कोन कहली कैंसिल कहूची देन नेक्स्ट देखो 8 टे कोन कहूची यू डैश ओपन द डोर बिफोर द बस स्टॉप्स मॉडल पर असले पण को कोन होता यू डैश ओपन द डोर बिफोर द बस स्टॉप कैन देछि नीडिंग देछि ओन देछि आ को देछि पर मस्ट देछि पूरा ठीक आंसर हो एटी जदि हम देखिया पिले एटी से प्रोहिबिट करछ कोन करछि प्रोहिबिट करछ ना अटको जो जिंस करे पे तो कोन हो प्रोहिबिट ले कोन हो कैन नॉट ना नीड नॉट ना वोंट ना मस्ट देवस्मिता क्वेश्चन बी हेबो एकदम ठीक बी हेबो प्रोहिबिट करछ जाने मना करछ तन गोटे काम करे where did he leave his bag where did he leave his bag what kind of question is it the code type of question ko where did he leave his bag code type of question obviously এটা কোন হবে এটা wh question হবে কারণ wh ওয়ার্ড লাগিছে যদি yes নো থান্ডা তাহলে কোন হ্যাঁ কিবা না রে কোশ্চেন আসথান তো এটা বি হবে আর ইয়া উপরে মধ্যে মু ভিডিও आंसर চিপি তুমি যাই তাকু দেখি পারিব ওকে দেন দেখিবা নেক্সট কোন দিছি cheese dash from milk dish cheese dash from milk makes na made na is made na has been made ठीक आंसर दो दे दियो cheese dash from milk makes made is made na has been made स्वप्नेश्वर क्वेश्चन ए हेबो अच्छा आप की कोन क्वेश्चन जल्दी कह दियो देवस्मिता क्वेश्चन बी हेबो देखो चीज डैश फ्रॉम मिल्क जब हम कहउछंती अच्छा आप कोन कहउछ आंसर सुभ्रांति क्वेश्चन ए हेबो देखो एठी तुम भाबो एटा कोथ रो अछि चीज डैश फ्रॉम मिल्क कहला ना डेटा से रखियो गोटे अछि मेड ऑफ हैला एठी तुम कहि देबी मेड ऑफ कहउछंती आ गोटे अछि मेड फ्रॉम कहउछंती हैला तो एठी तो फ्रॉम लागिछि तो तापर कोन लागे इज मेड हो ना ठीक चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क एटा ठीक देखियो चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क हैला सीधा ठीक आंसर हो जूली क्वेश्चन सी एकदम ठीक सीधा हो ठीक आंसर देन क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट कोन कहछि द अंपायर डिक्लेयर्ड द बैट्समैन आउट व्हिच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द
of this sentence. A sentence से कोड़ा correct passive form अच्छी को. तो umpire declared the batsman out. याको passive करियो. याको passive करियो अच्छी. तो कौन होगा? The umpire declared the batsman out. Which is the correct passive form of this sentence? First पहले कौन? The batsman was declared out. Then they see the batsman was declared out by the umpire. Then they see the batsman declared out. Out this the umpire declared out. এটা কোড টেন্স আছে দেখো এটা কোড আছে পাস্ট আছে না ডিক্লেয়ার্ড ଦେଇଛି পাস্ট ଅଛି নো কি ଆଉ ଯଦି এটা ପାଷ୍ଟ ଅଛି ପିଲେ ଯଦି ତମ ପାଷ୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ଏଠି କଣ ଲାଗିବ ୱାଜ ଲାଗିବ ମନେ ଅଛି ତ ରୁଲ୍ସ ଆଚ୍ଛା ପିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେବ ସୁଭ୍ରାନ୍ତି କୋଶ୍ଚି ବି ହେବ ଠିକ ଆନ୍ସର କାହିଁ ବି ଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ କହିଲ କାହିଁ ନା ଦେଖ ଏଠି ତମର କଣ ବାଇ ପ୍ଲସ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିନି ହେଲା କି ବଟ୍ ଏଠି ବାଇ ପ୍ଲସ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଛି ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇ ଦ ଅମ୍ପାୟାର ଲେଖା ହେଇଛି ତ ବି ହେବ ଠିକ ଆନ୍ସର ବି ହେବ ଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି ओके तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखी which of the following is a sentence based on hypothetical condition इस तोरे जो साथी सेंटेंस देखी ए भीतर कोटा होचा hypothetical ए देखी if you work hard you will get good marks if you अच्छा hypothetical मतलब कौन पूरे imaginary तुम विश करछो गोटे जिंस इमेजिन करछो कल्पना करछो हैला तो सही आंसर भाबो hypothetical कोड भाबो if you work hard you will get good marks if you hit ice it melts now if I were a cloud I would float in the sky now तमर कोन देखिए if the food had not been कोन कहछि too hot I would have liked it hypothetical कोड स्वप्नेश्वर क्वेश्चन डी हेबो देखो डी तमे जो कोजो एटा होची जदि हम देखिबा एटा होची हाइपोथेटिकल ठीक अछि एटा होची हाइपोथेटिकल हम एको हाइपोथेटिकल कहि परिबा हैला हाइपोथेटिकल बट एटा इम्पॉसिबल आ पॉसिबल नो जने एटा इम्पॉसिबल हम कहि परिबा या पॉसिबल नो बट इफ आई वर ए क्लाउड यदि मोर क्लाउड हे थांती आई वुड फ्लोट इन द स्काई मु जदि बादल हे थांती मु आकाश रे उडंती तो एठी मु विश करछि एठी एटा 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 को हाइपोथेटिकल कहि परिबा जन एटा होची हाइपोथेटिकल କାରଣ ଯଦି ଇମାଜିନ କରୁଛି ନା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥାନ୍ତି ତ ଇମାଜିନ କରୁଛି ତ ଇମାଜିନ ମାନେ ହିଁ ହଉଛି ତମର ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଳ୍ପନା କରୁଛ ତମେ ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ଠିକ ହଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କଣ କହିଛି which of the following is a correct conditional sentence ଏଥିରୁ କୋଉଟା correct conditional which of the following is a correct conditional sentence क्वेश्चन फॉर्म ସବୁ ଦେଇଛି ବଟ୍ କୋଉଟା correct ହବ ସେଟା ସେ କହିଛି will you help me देखो will लागिला एठी will लागिची तोटा भूल हबो ए स्ट्रक्चर तो नो काम को can लागिची हला can I see your friend if I go to his house एटा कहिची and what will happen if you pour oil स्ट्रक्चर वाइज देखो पिले खाली एमपी देखि दियो ना स्ट्रक्चर वाइज कोड बेस ठीक लागु सेटा को आंसर देबो जैसे क्वेश्चन पजाउछ ना कौन हुए न कौन हबो देखो कैन आई सी योर फ्रेंड मु तुम सांगो देखि परबी कि इफ आई गो टू कौन गो टू हिज हाउस एटा कहला उठे हला आउट कोच व्हाट विल हैपन इफ यू पोर ऑयल इन वाटर कौन हबो देखो एटा से क्वेश्चन फॉर्म रे जेतु कहूची जेतु सेटा क्वेश्चन फॉर्म रे कहूच बिले तो जदि हम से अनुसार देखिबा एटी सीटा रे ठीक लागुची अब बीटा भी ठीक हेई परिबो तो तमे दीटा आंसर प्राय पॉसिबल लागुची बट एटी बेसी ठीक लागुची क्वेश्चन आंसर लागुची सीटा ହେଲା अब बीटा जदि हम देखिबा स्ट्रक्चर वाइज कैन टा लागिची बट जदि हम देखिबा क्वेश्चन वाइज एटी विल लागिची कोन टा हबो बोल कहूची कोन टा हम ऑयल पकेबा एटा भासे तो सेटा स्टेटमेंट रे पळुची किंतु एटा जेहेतु कोथर अछि क्वेश्चन फॉर्म रे अछि तो एटी बी आ सी दीटा को प्राय ठीक होची हैला ओके नेक्स्ट देखो कोन कहूची यार एटा हां यार आंसर दियो I will see you later. I said to my friend. I will see you later. I said to my friend.
What does this sentence become in indirect speech? एबे तम indirect करिबा ताले कोन हो? I will see you later. I said to my friend. देखो I said to my friend कहला बुझ नहीं तो से अनुसार देखो I said to my friend कहछि then I will कहछि will लग जाई तो से अनुसार खोजो कोटा हो तो आंसर क्वेश्चन सी हो will लागि तो फास्ट देखो जेहेतु आगो will लागि तो तुम से अनुसार खोजे पड़िबा हला तो would देखो एठी देछि एठी will अछि एटा हबन एठी would अछि एठी would अछि एठी would अछि तीनटा जरे would अछि तो स्ट्रक्चर मन पका कोन हो I suggested कहछि I requested कहछि I said to my friend कहछि हला तो चारटा ऑप्शन देछि कमेंट रे आसुन दे गोटे मिनिट हां तो बहुत पिला डी को देवस्मिता क्वेश्चन डी हेबो देखो एठी हम कहउछंती विल ता तो प्रथम हबोनी तो सजेस्टेड कहछि रिक्वेस्टेड कहछि सेड कहछि देखो एठी तो सेड कहला ना एठी तो रिक्वेस्ट करने से जो नहीं तो डी ता ठीक आंसर डी ता ठीक आंसर हो आई सेड टू माय फ्रेंड दैट आई वुड सी हिम लेटर एठी रिक्वेस्ट करे नहीं करी ता हबो नहीं सजेस्ट करे नहीं तो सजेस्टेड हबो नहीं हैला तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो এটা কোন হবো the time expression tomorrow changes into dash in reported speech যদি tomorrow থিবো তো reported speech রে কোন হৈ যায় सपोज तमर डायरेक्टर अछि कोन रिपोर्टेड तो इनडायरेक्ट हम कोन करे देबो tomorrow थले कोन हिजो नेक्स्ट डे हिजो ना द फॉलोइंग डे हिजो द नेक्स्ट डे हिजो ना tomorrow हो सुब्रन क्वेश्चन सी हेबो आउ कि आंसर दोजो सपोज क्वेश्चन नॉट सी आउ त कोड हो सी कहछि कोन द टाइम एक्सप्रेशन tomorrow कहछि tomorrow टा कोन हिजो द नेक्स्ट डे एक्चुअली सी टाइम त ठीक हो द नेक्स्ट लगी सी ठीक हो हैला ओके देखो नेक्स्ट वन कहछि द ओल्ड मैन डज द चिल्ड्रन टू स्टे अवे फ्रॉम हिम स्टे अवे हम कहछि स्टे अवे फ्रॉम हिम तो कोन होटा द ओल्ड मैन डज द चिल्ड्रन टू स्टे अवे फ्रॉम हिम ऑर्डर्ड ना थ्रेटेन ना वांट ना रिक्वेस्टेड हां एटा ठीक हां एटा आंसर दे जल्दी जागेशन क्वेश्चन ए हबो ऑर्डर देखो पहिले स्टे अवे कहला ना स्टे अवे कहछि दूरे ही रहो तो वार्न करछि ऑर्डर केम दो ऑर्डर तो नो ना सी हबो वार्न कर दो ना सीता स्टे अवे कहछि ना हैला ओके तो तमरो प्रोज पोएट्री स्टोरी आ ग्रामर हम डिस्कस करले किछटा क्वेश्चंस तो एबे हमें देखिबा आ किछटा प्रोज रो क्वेश्चंस जोटा तमर थाए ग्रुप बी अंडर आसे ना जे क्वेश्चंस ग्रुप बी रो हैला ग्रुप बी रो क्वेश्चन देखिबा आ शॉर्ट क्वेश्चन तो हम डिस्कस करिबे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ताको डिस्कस करिबेनी हमें केवल एमसी करबा आ तमरो डिक्शनरी स्किल करबा आ तमरो कोनटा द प्राइस ऑफ पॉल्यूशन करबा हैला तो तमरो एमती टेक्स्ट आथुले देखो एबे टेक्स्ट आस्थिबो जेटा कि लास्ट वर्ष पढितला ए टाइप आसुची प्रोज रे मध्ये ए टाइप टेक्स्ट आसीबो पोएट्री मध्ये आसीबो तार अंडर रे तीनटी क्वेश्चन देइथि हैला तो हमें से टेक्स्ट रे पढिबानी डायरेक्ट आंसर करबो कोन कहि देखो एटा हो तमरो माय मदर सॉरी हमर कोन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी अच्छा हाँ तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी देखि देटा प्रोज पार्ट रो बी हला तो यार आंसर कोन कहि दे ए दिस कोन फर्स्ट वन देला व्हाट डज द लास्ट चैप्टर ऑफ अ लाइफ मीन लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ को माने कोन एटा बारंबार को जेटा कोनटा पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कोन बेटा
her death, na her illness, na her recovery, na none of the above. Her last chapter of her life, death, obviously death of ए हबो ठीक हैला तो नेक्स्ट देखिबा आउ कोन दिस क्वेश्चन देखि हां आउ दिस क्वेश्चन which of the following words mean old and very bad condition এটা কোন হবে overstraining না neighborhood না customary না dilapidated जल्दी आंसर दियो डी हेबो ठीक आंसर डी हैला एटा बुक रो तुम पढिछ बुक रो क्वेश्चन छिता बुक रो तमरो अछि एटा देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला द grandmother sang of homecoming of warriors for dash कहा पई सॉरी कोन फॉर dash केते केते समय पई एटा मते तुम बुक रो टर्म दा many hours ना few hours ना several hours 1 hour बुक ता थोर पढ़ दो बिले several hours हैला सीधा हो ठीक आंसर ओके देन देखिबा बे पोएम रे देखो ए टाइप रो प्रथम तमरो पढिथिबो क्वेश्चन छिटा ए बडा जो तुम डेटा करिवो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स तुम लिखिया पड़िवो हैला तार अंतर देथिबो कोन गोटे पैसेज देथिबो गोटे एक्सट्रैक्ट देथिबो जो एक्सट्रैक्ट तुम बहिर देथिबो हैला जोटा कि हमें क्वेश्चन जोटा पढुची तार आंसर तुमको कहूची हैला एडी जो पोएम रे दला एटा खार दला पोएम दा एटा सम ऑफ लाइफ रो जो नहीं एटा सम ऑफ लाइफ रो तो सम ऑफ लाइफ रो गोटे देला तो तुम तार आंसर दो हैला तीनटा क्वेश्चन देखो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देला What does the poet prefer? Poet का मतलब कौन टा prefer करते हैं? Present, past, ना future, ना all of the above. स्वप्न सर क्वेश्चन सर पाई चार्ट अब पाई चार्ट ऊपर हम सब वीडियो आंसर जे देखि दा ना रोज तमर कोन रोज पोएट्री स्टोरी राइटिंग सब वीडियो आंसर जे देखि दियो होला प्रेजेंट एकदम ठीक प्रेजेंट को से प्रिफर करते हैं देन why are the cattle described sorry how are the cattle described cattle मतलब केमि डिस्क्राइब कराई छी field of battle कहि की ना bivouac of life कहि की ना tomb of driven कहि की ना heroes in the strife कहि सर केमिति डिस्क्राइब कराई छी एटा हबो कोन tomb of driven coward क्वेश्चन नो कि tomb of driven माने कोन coward क्वेश्चन ओके तो देखियो नेक्स्ट वन कहि छी the word sublime means कोन जो गोटे वर्ड अछि sublime तो यार माने कोन से पोएम रो कोच क्लियर सो से पोएम कथा को सिंपल ना हम्बल ना जेंटल ना नोबल कोड हबो स्वप्न सर क्वेश्चन बी हबो हम्बल अच्छा आ की कोन कहजो एटा नोबल हबो सबलाइन नोबल के परिवार हैला सीट हबो ठीक आंसर सीट हबो बुक रो पढ़जेता तमरो बुक रे जो दे जो वर्ड मींस तार चीते ड्रीम पकेज हैला ओके नोबेल डिस को ना ना अच्छी भलो काम कर तो लाइफ को नोबेल कर परिबो ओके देखो नेक्स्ट वन कहि छी क्वेश्चन नंबर 5 से टाइप हम देछि तुम एथु करो दीटा बट हमें देखियो बी जोथरे एमसीक्यू देछि एटा को चैप्टर असला मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप हैला मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप असला मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप हैला तो देखियो तार एमसीक्यू कोन पढि छी फर्स्ट दला who were full of anxiety को माने बहुत एंजाइटी थे स्वप्न सर को रिपोर्ट राइटिंग बाबा रिपोर्ट राइटिंग ऊपर आसे छि वीडियो समस्त ऊपर वीडियो आसे छि ए देखि दियो हैला रिपोर्ट राइटिंग तमरो प्रोज पोएट्री स्टोरी देन राइटिंग रो सब प्रकार डायग्राम तार ऊपर सब वीडियो आंसर छि who were full of anxiety local people ना ministers officials the narrator friends ना minister followers कोड ऑफ आंसर एटा हबो तमरो नाइट्रस फ्रेंड्स हैला सी हबो ठीक आंसर जो छुआडा जो माने भयर थिले टोपी हजिच कहि की ती एंजाइटी रथिले हैला गोटे मिले ने और ना ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिले कोन कहला अच्छा ठीक है एपिसोड देले ओके हां प्रोज तमरो प्रोज मात्र सॉरी प्रोज आसो तीनटा एमसीक्यू ग्रुप बी रे स्टोरी आसो तीनटा सॉरी स्टोरी आसो दीटा आ पोएम आसो तीनटा कोन कहछ देखो व्हाट डिड श्री महाराणा डू एगरली व्हाट डिड श्री महाराणा डू एगरली फॉलो द नैरेटर
ना patted the narrator, wiped sweat from his forehead, ना stood dumb for a moment. देखो ये जो क्वेश्चन पचार चिले जो नहीं ये जो क्वेश्चन पचार ची तुमको यहाँ पे देखो पैसेज जन एटा तुमको पैसेज देखो पिले एटा तुम याथरो आंसर कर देखि करिवो जो एमसीक्यू गुडा देखो हला कि तो एटा ए आंसर जम देखिबा एठी हेबो कोन एटा ठीक आंसर हेबो सिधन जो बोर्ड ले दान पछपछि गले काना से बहुत कष्ट थिले बहुत टेंशन थिले कि टॉपिक कोन हेच कहि तो से अनुसार तांको से कहले ताकि किसी कहया पे छाड़िले कि नरेटर तो से तांको पाखु जाइथिले ओके तो एबे ग्रुप सी देखो ग्रुप सी रे कोन देइथिले ग्रुप सी रे देइछि गोटे हमर डिक्शनरी स्किल देइछि हला डिक्शनरी स्किल देइछि तो याकू मध्ये हम करियो तो याकू टिकी केन क्लियरली विजिबल हो मु ये करूछि सो दैट हम ठीक से देखा जिवो गोटे ओके देखो आगे देखि दो कोन देइछि वर्ड कोन देइछि देखि दो वर्ड तमर देइछि ए डिक्शनरी गिव्स हां डिक्शनरी स्किल पढिबो केते मार्क्स 5 मार्क्स पढिबो जानछो आ तापे मध्ये गोटे वीडियो मु आन्सर थि कि केमिति कोन कोन तमरो तमे आंसर दबो केमिति को फॉर्मेट आंसर दबो ताक मध्ये तुम कहि सछि स्वप्नेश्वर तमर सब आसे छि नोट मेकिंग आसे छि तुम ये देखि दो हला हम वीडियो चेक करि को देखो कोन कहि देखो वर्ड देला कोन क्लब कोन देछि क्लब देला वर्ड देछि क्लब यार आंसर समते कहबो कोन होला देखो क्लब देला वर्ड ता डिक्शनरी स्किल रो तो एठी तमरो फर्स्ट किछटा मीनिंग देछि कोन मीनिंग देला फर्स्ट मीनिंग देला an organization consisting of people who join together for a certain purpose then b kon dala b dechi a thick heavy stick used as a weapon then c kon dechi a playing card on which black three left finger is printed ଗୋଟେ कार्ड विषय देखो ଗୋଟେ कार्ड गेम देखो छी आ d kon दोची अच्छा to beat or hit hard with a stick then d e kon dala to combine to raise funds for a purpose तो जदि हम तार ओडिया मीनिंग देखिया पिले फर्स्ट कोन कोन गोटे ऑर्गेनाइजेशन को देखौ छी हैला देन नेक्स्ट कोन कहै छी गोटे स्टिक को देखौ छी हेवी स्टिक गोटे वेपन से तो हम यूज कर परिबा देन गोटे कार्ड गेम से कहौ छी देन कोन जन को कोन हिट करबा गोटे स्टिक एटा कहौ छी और कोन कहला टू कंबाइन गोटे माने फंड रेज करे पे कहौ छी हैला तो एमती थोर पांचटा मीनिंग देला then देखो इट नेक्स्ट तार सेंटेंस कोन देछि सेंटेंस देला कोन you should have से कहै you should have played a club if you didn't have a diamond तो एटा कहा बिषय कहै को you should have played a club if you didn't have a diamond तो यार कोड हबो a b c d e कोड हबो तुमको ठीक है उसको यार कोन हबो देखो ये कहछि गोटे तापर हां देखो then देखियो नेक्स्ट जो देखि छी जो नेक्स्ट कहला you should have played a club if you didn't have diamond तो गेम विषय से कहउछ ना एटा गेम विषय कहउछ तो कोन ठीक हो सी टा नो यार कोन हबो सी टा ठीक हो यार देन देखिबा he killed the lion by hitting it he killed से मार देला कोन टा लायन को by hitting it तो बाडे की को on the head with a heavy club the heavy club रे ताको बाडी की मारला से कहउछ तो कोन हबो बी हबो a thick heavy stick used as a weapon गोटे वेपन से ताको यूज करछि एटा गोटे नाउन दा एटा क्लब ता कोन गोटे नाउन देखौछ ना एटा वर्ब नो एटा नाउन दा तो एटी कोन हबो बी हबो एटा कोन हबो बी देन नेक्स्ट कोन कहछ देखो have you become a member of the club have you become a member of the club एटा कोन हबो क्लब बिषय कहउछि तो कोन an organization consisting of people who join together for a certain purpose तो एटा हबो एटा एटा हबो कोन एटा देन नेक्स्ट कोन कहछि the club sorry they clubbed together club कहला प्लेट एटा वर्ब ता देखोंटा एटा वर्ब ता ना तो इबे देखो कोन कहछि they clubbed together to collect money for the function they clubbed together to collect money कहला तो कोन देखौछि फंड विषय देखौछि गोटे फंड विषय देखौछि तो एटा हबो ईटा हबो हैला एटा कोन हबो एटा हबो तमरो ईटा देन लास्ट ता जो देछि the enemy was clubbed to death एटा मध्ये गोटे वर्ब ता देछि clubbed to death तो आ गोटे बाकी अछि हम कोनटा
এটা তোমার হবো টু বিট অর হিট হার্ড, এটা ভার্ব দেখুছি, তো এটা তা ପାଇଁ ঠিক হবে ডি টা ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ହବ ତମର ଡି, এটা হବ ডি। তো ଆମେ କିଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ ବି କଲେ ପିଲେ ଆମେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତମର ଯୋଉ ପଡୁଛି क्वेश्चंस କଣ, नेक्स्ट तमर आसला कि प्राइस ऑफ पॉल्यूशन। प्राइस ऑफ पॉल्यूशन जब हम देखिए पिले, प्राइस ऑफ पॉल्यूशन रो तमर ए टाइप रो पैसेज देबो। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहला, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच इन वन लाइन सेंटेंस। तुमको वन लाइन सेंटेंस रे आंसर देबो पड़ियो, बुझो नहीं, वन लाइन रे आंसर तुमको देबो पड़ियो। तो एठी जब हम देखिबा तुम एक प्रथम पढिबो आ मते लागुचे एग्जाम रे देबो, काइना से वोकैबुलरी स्किल पकोछ ना, ये तो वोकैबुलरी स्किल पकोची, तो तुमको जेमिति ले से पैसेज देबो बा एक्सट्रैक्ट देबो, माने हम आंसर करियो केनटा हैला। तो देखिए कौन पढ़ दो कौन कहिची, पीपल ब्रीथिंग डर्टी एयर आल्सो सफर मोर कोल्ड एलर्जी इवन सर्टेन कौन कहिची स्ट्रेन्स ऑफ फ्यू। तो या तो प्रथम हम पढ़ी देबो, म आ पढुनी एंड हम डायरेक्ट आंसर करबा। तो फर्स्ट इज व्हाट डिड चांग चांग चुआन वन, से कौन वन करथिले हैला, यार आंसर कौन हबो, ए सब जिंस तुम पिले निजे कर परिबो, वन लाइन आंसर तुमको इजी लागो करिया पे, किछ कष्ट नै ए सब जिंस हैला। आ जो बाकी जो रहला क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 रे कोन कहिची, फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस इन द एक्सट्रैक्ट इन द क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। जोटा कि ए टाइप रे ही तमरो क्वेश्चंस आसुची, माने या पूर्व जो हम देखिबा जैसे कि ऑनसीन पैसेज आसुतला पिले हैला, ऑनसीन पैसेज जो आसुतला सेथिरे जब हम देखिया पिले कोन होतला ना, पैसेज होतला ता अंडर रे क्वेश्चन होतला आ वोकैबुलरी स्किल पई मते क्वेश्चन होतला। तो जेतु से वोकैबुलरी स्किल लिखिची, तो मते लागुची कोन ए टाइप रे क्वेश्चन आसीबो। तो एग्जाम देला पर ही जाना पड़िबो, साइंस लैंग्वेज एग्जाम चला पर जाना पड़िबो को टाइप कोन पड़ुची हैला। देखि दियो तो ठीक अछि, मु यार आंसर से काट दोची कोन कहि देखो, फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस इन द एक्सट्रैक्ट इन क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जार मीनिंग्स फॉलोइंग थियो। ए जो जहा तीनटा जे मीनिंग देची, ए जो तीनटा मीनिंग दला या पे तुमको खोजेर अछि कोन, वर्ड्स खोजेर अछि। फर्स्ट दला फीवर कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, गोटे पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया पई बा वायरस पई जो जरो होछ, ता कोन कहिबा, ता कोन ता कहिबा तुम क्लियर क्वेश्चन ता कोन बुझन, एटा ही पर आंसर कर। देन देखो नेक्स्ट कोन कहिची, ए पर्सन हु इज स्किलफुल इन अ पर्टिकुलर एरिया, जने गोटे पर्टिकुलर एरिया रे स्किलफुल थिबो, ता कोन कहिबा, या पे एक्चुअली टिके तुमको पढ़िया पड़िबो हला, ता हम एक्सपोर्ट करि परिबो, हम कहबा एक्सपोर्ट कहिबा कन से स्किल्ड अछि, तो हम एक्सपोर्ट कहिबा। देन आउट कोन दिस देखो, नेक्स्ट देला वेरी स्मॉल कहिछि, बहुत छोटो, वेरी स्मॉल, यार आंसर कोन हो देखि दियो। आई होप ए भीतर थाई पारे, ते खोजि दियो तू वेरी स्मॉल पे को वर्ड हो, वेरी स्मॉल। टेलीविजन रे एमसीक्यू स्वप्नेश्वर कहउछन, टेलीविजन रे एमसीक्यू सब आसे, हम ऑलरेडी या पर डिस्कस कर साइते हैला। तो वेरी स्मॉल पे देखि दो वर्ड्स कोड आबो, टाइम छोटो हैला। तुमको एग्जाम रे एटा सब लिखेर अछि, तुमको ए भाषा रे मीनिंग काढे पे देइतबो, तो तुमको ताको लिखेर अछि एटा। एटा कोन गेला, एटा फ्यू हे गेला। देन एटा कोन गेला तमरो एक्सपर्ट, देन एटा कोन हिजिबो, सॉरी एक्सपर्ट हला कोडा, ए पर्सन हु स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो वेरी स्मॉल पे कोन हबो, टाइम हे। तो ए टाइप तुमको आंसर करे अछि। देन देइतबो कोन सेंटेंस को बना पे कहितबो, वोकैबुलरी स्किल रे कहितबो कोन, यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, निज सेंटेंस बनबो। एठी कॉपी कर परिबन तुम, एठी जो जिंस देइछि एठी तुम कॉपी कर परिबो नाही, डोंट कॉपी, बुझा नहीं, कॉपी जमा भी करबन, मोतला एठी कॉपी कर दियंती, कॉपी करबन हैला।
कौन करिवो निज वर्ड्स लिखिवो निज सेंटेंस बनिवो तो मते को बिसाइड्स पई गोटे सेंटेंस बनेलो जोन सब अच्छो एबे बिसाइड्स पई गोटे सेंटेंस बना सेंटेंस ऑफ योर ओन निजे बना बिसाइड माने कोन जन को आउ जन को बिसाइड्स सपोज मु कहि बिसाइड इंग्लिश ही आल्सो टीचर्स ओडिया कोन कहली बिसाइड्स इंग्लिश एटा एग्जाम रे बहुत परिचय करी बिसाइड वर्ड जने बिसाइड्स कोन कहला बिसाइड्स इंग्लिश ही आल्सो टीचर्स ओडिया एटा कहि परिबो और रिकवर फ्रॉम याको याको नै गुटे कोन रिकवर फ्रॉम बारंबार कोच पिले तमे जमा भी कॉपी करिवनी कोठो जो टेक्स्ट देइतो टेक्स्ट जमा कॉपी करिवनी स्वप्न सर क्वेश्चन सर अपन को कॉलेज रो मु एक्चुअली किसी पर्टिकुलर कॉलेज रे नाही खाली गेस्ट फैकल्टी रो काम करे आउ पुणी मु कहि दोची आउथरे जो माने परे वीडियो देखुछ आसी मु तुम कहितली चैप्टर वाइज ग्रामर रो वीडियोस नै के आसीबी जेमते कि मु प्रोज पोएट्री स्टोरी रो नै के आसीली बट सेटा पॉसिबल हलानी काना टाइम देव नाही आ जेहेतु ठीक टाइम रे देहटा खराब हेला मोर काल के काल माचो दिन खराब हला तो आ चैप्टर वाइज नै आसी तो एबे हम कोन करबा ना मु सबु दिन ट्राई करछि किछ ना किछ एवं नै के आसीबी तमरो सेट आ अपन प्रैक्टिस करबा तो तमे आगु पढि आसो और केटिन शेष करबा अच्छा सपोज हम कहबी सी रिकवर देखो एठी तमे वर्ब रे चेंज कर परिबो तो एठी चेंज कर परिबो कोनटा तमरो जहा भी सपोज तुम कहबी हम वर्ब रे सेकंड फॉर्म यूज करी कहि परिबो जन सपोज हम कहबी सी रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस जन से कहै छी ना इलनेस टू रिकवर कला तो एटा पे लिख परिबो तमे एठी वर्ब रे देथबो जहा भी सब वर्ब देथबो तमे ताको वर्ब रो फॉर्म चेंज कर परिबो हला ओके ठीक अछि तो हमरो एटा मध्ये सरी गला हम गोटे सेट कर देले तो एबे सेट 2 को जीवा बिले नेक्स्ट सेट जीवा सेकंड सेट रो से सेम सब कहूची कोन करिया हमें करिबा प्रोज पोएट्री स्टोरी एमसीक्यू प्रोज पोएट्री और तमर स्टोरी यार एमसीक्यू डिस्कस करिबा से सेट रे जहा देछि एंड ग्रामर रो एमसीक्यू डिस्कस करिबा ग्रामर रो तो केते हे गेला टोटल 38 मार्क्स रो एमसीक्यू जेगा देन तास कोन करिबा ना तमरो प्राइस पोजीशन रो क्वेश्चन से डिस्कस करिबा केवल माने कोन वोकैबुलरी स्किल को माने वन लाइन रो आंसर पाई तुमको पढिया पड़ो टेक्स्ट तुम आंसर दो आउ देन करिबा डिक्शनरी स्किल्स हैला तो याको ही हमें सब एबे डिस्कस करिबा ओके देखो सेट 2 कोन कहिछ बिले एक फर्स्ट क्वेश्चन देखो कोन कहिछ हाउ वाज अमेरी स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड यार आंसर दिया how was Ameri standing on the bank of the pond in a thoughtful position na in a very sad mood na in a very happy mood na in a careless posture कौन हो तो ए है ठीक आंसर एटा थॉटफुल पोजीशन नो कि ଗୋଟେ meditative posture ଶିକ୍ଷା ହେଇଥିଲା तो नेक्स्ट देखिए कौन कहिछि नेक्स्ट कहला सेकंड देखो कौन कहिछि when was the writer given a room of his own केबे एटा होचे तमरो कोथर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी राइटर को केबे निजर रूम दियाइतला ड्यूरिंग हिज स्टे इन द विलेज ना आफ्टर ही वेंट टू सिटी ना आफ्टर ही वाज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल ना व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी कोड अब ठीक आंसर जूली कोच में डी एकदम ठीक जूली डी है ठीक आंसर व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी दैट इज यूनिवर्सिटी गले तो से समय रे कोन ला तांगो गोटे पर्सनल रूम तांगो देतला सेपरेट रूम देतला तो नेक्स्ट कोन कहिस देखो which of the following mean not logical and sensible या तो कोटा रो मीनिंग होच कोन not logical और sensible not logical or sensible जल्दी आंसर दियो not logical and sensible तुम बुक रही क्वेश्चन से क्वेश्चन तुम बुक रही आसी which of the following mean not logical and sensible both the question A answer absurd अच्छा सुब्रत क्वेश्चन सी हेबो अनडिग्निफाइड आउ कि आंसर कोचो
देखो बी आउ बी जेटा देखिए बी आउ डी तो हबो ही नहीं, बी आउ डी हबो ही नहीं। स्वप्न सर क्वेश्चन ए अनडिग्निफाइड आउ कोइ कोन एब्सर्ड। तो जदि हम देखिबा एठी देखो एब्सर्ड आउ तुम दुटा वर्ड यूज थिला एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट हला। एब्सर्ड एंड कोन थिला अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। तो याकू टिके तुम चेक कर दो भी जदि हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल। लॉजिकल नो जदि हम कहबा से अनडिग्निफाइड मे बी अनडिग्निफाइड ठीक है तो अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट आउ ए एटा दुटा वर्ड ले एर मीनिंग ठीक देख दो बोलसे एब्सेंट एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। ओके देखो फोर्थ कोन कहछि व्हाट ब्रिंग्स क्रैब मेंटालिटी। कोन जरा क्रैब मेंटालिटी को निके से क्रैब मेंटालिटी क्रैब मेंटालिटी जदि देखिए क्रैब मेंटालिटी कहछि माने कोन जो कंकड़ा प्रकृति बुझा नहीं। तो एंगर देछि फियर देछि एनवी देछि और डिससैटिस्फैक्शन देछि एवरी कोड हाउ एंगर फियर एनवी डिससैटिस्फैक्शन देछि। तो एंगर माने कोन राग कहछि राग पे आसे कि राग पे तो भय पे आसे कि ए माने कोन ईर्ष्या ईर्ष्या। तो आमे जदि देखिबा आमे परस्पर को ईर्ष्या करू जेतु ईर्ष्या करू सब जने किछि सक्सेसफुल काम करूची बुझा नहीं तो ताको हम सही पारुना ता गोड़ टाणु। तो ताकू जदि हम देखिबा ठीक हो आंसर कोडा हो डी हो डी हो यार ठीक आंसर जेटा हम ईर्ष्या बोली कहछन। हैला आउ आउ दिन कोन रखो जो हमर जो एच जो दिन दिरा अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन नॉट लॉजिकल और सेंसिबल। यार वर्डिंग जे देखिबो दुटा दिन लिखा छै एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट जो नहीं। तो जेटा कि लॉजिकल न पाए गले कि एटा बेसी ठीक लागो हां सी टा एकदम ठीक कंफ्यूज हे पारो ना से टर्म टा माइंड पळे आछि। तो एटा ठीक हो एब्सर्ड हैला एब्सर्ड ठीक हो बुक जे चेक भी कर दो सब थोड़ा ठीक देखो कोन कहै छी व्हाट इंक्रीजेस सेल्फ एस्टीम ऑफ टीम प्लेयर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहै छी व्हाट इंक्रीजेस सेल्फ एस्टीम ऑफ टीम प्लेयर्स। मैजिक ऑफ टीम वर्क जूली क्वेश्चन की सी हबो एकदम ठीक डाइवर्सिफाइंग टास्क सी हबो ठीक आंसर। देन 6 कोन कहै छी द एक्सप्रेशन अंडर ग्रीन शर्ट्स रो माने कोन। द बालाड ऑफ फादर गिलिगन क्वेश्चन है द बालाड ऑफ फादर गिलिगन अंडर ग्रीन शर्ट्स काहा रेफर करछि ग्रेव ना डेथ बेड ना ग्रासलैंड ना ग्रीन फील्ड। जागेशन क्वेश्चन सी जूली क्वेश्चन ए सुभ्रांति क्वेश्चन बी अंडर ग्रीन शर्ट्स ले कोला ना तो ग्रेव देखौ ना ग्रेव जन ग्रेव को देखौ बट जदि खाली पर्सन शॉर्ट्स कहले कोन हेतै शॉर्ट्स अपर लेयर ऑफ ग्रासलैंड बट अंडर ग्रीन शर्ट्स ले माने कोन डेथ बेड नो डेथ बेड होबनी ठीक तापे ठीक वर्ड होत कोडा ए ग्रेव हो। ओके तो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोटेशन फ्रॉम बाइबल। बाइबल को कोटेशन दछि को लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम ना ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट ना बी अ हीरो इन द स्ट्राइक ना डस्ट द आर्ट टू डस्ट द रिटर्न्स कोटा ए भीतर कोटा आसीस तमरो बाइबल रो लाइन दादा लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम ना ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट ना बी अ हीरो स्वप्न सर क्वेश्चन ए आउ की कोन आंसर दोचो मिकू क्वेश्चन डी एकदम ठीक मिकू एकदम ठीक डी हेबो ठीक आंसर डी टा डस्ट द आर्ट टू डस्ट द रिटर्न्स एटा होची बाइबल रो लाइन दा हला डी हेबो ठीक आंसर डी टा हेबो ठीक आंसर डी एटा मतलब पोएम टा पढिसली सेतले भी कहथि एटा बाइबल रो आछि लाइन प्रोज पोएट्री स्टोरी ग्रामर प्राय सब वीडियो पढासी राइटिंग भी ऊपर सब वीडियो पढासी ए देखि दो। ओके आ मु आउ थरे पुनी कहि दोची जो सब जॉइन करतो गोटे मु तुमको जो प्लानिंग टा देथिले से प्लानिंग अनुसार करि हेलानी
क्लासेस देहतु माने टिके देह खराब हेगला तो पीपीटी हेरिका सब बन हेई पालन किछे तो एबे मु कोन करियो ना ए टाइप सब हमें सेट प्रैक्टिस करियो हैला आ तुमको मु सियो सेट प्रैक्टिस तो करियो देन तुमको गोटे कॉन्फिडेंस आसीबो कि हां मु अटेंड करि पारछु कि ना चैप्टर जे आनते कोन था तुम खाली से चैप्टर ही रहिथान तो एटा गोटे वे भलो हला कि हम सब सेट प्रैक्टिस करियो सेट रे जहां क्वेश्चन आंसर देछि ताको हम एक्सप्लेन करबो हैला तो देखो 8 कोन कहिछि देखो व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ लाइफ ने की पोएट कोन कहिछि लाइफ इज an empty dream na life is real and honest na life is for enjoyment na life is for sorrow koda what does the poet say about life poet life ne kon question life is an empty dream na life is real and honest na life is for enjoyment na life is for sorrow life is real and honest very good b है ठीक आंसर लिखो क्वेश्चन बी एकदम ठीक लिखो B. Life is real and life is honest. Then the poet urges the parents not to dash the television at home. It's बहुत easy. Some poem line da. Install. Okay. Eta. Then the next question कौन देखी? The poem Money Madness was written by dash. Kill actually. Poem Money Madness. Kill actually. Poem Money Madness to kill actually. Robert Saudi. Thomas More, H.W. Longfellow, and D.H. Lawrence. Money Madness. Whatever. Miku question D. Subhrant question D. एकदम ठीक D. D.H. Lawrence. So poet ना उड़ा मन रखियो रे, है ना? Poet ना उड़ा सब मन रखियो. Okay, next question देखो कौन कहिछि? Which habit did Sri Maharana give up 10 days prior to the reception? Reception हबार 10 दिन पूर्व माने से कौन को तांगर को हैबिट को छाड़ सकले श्री महाराणा sleeping in the afternoon and getting up early in the morning and going to bed early and doing physical exercise. अच्छा लिखो क्वेश्चन ए एकदम ठीक sleeping in the afternoon तांगर अभ्यास थिला ना आफ्टरनून टाइम सोइबा किंतु से अभ्यास से छाड़ सकले हैला Hubbard was dash year old. Hubbard कितने वर्ष थे? कितने वर्ष थिला तब? 18, 19, 20, 21. Hubbard was dash year old. 18, 19, 20, 21. देवस्मिता क्वेश्चन बी है वो एकदम ठीक देवस्मिता बी 19 years old नो कि ताको मात्र 19 वर्ष थिला ओके नेक्स्ट देखो स्टैंडिंग एट द डोरवे Mrs. White was looking dash. Mrs. White जो ने कोन डोरवे पाखे छाई कोड देखथले कोन करथले looking at dash was looking dash at the sky na into the darkness na at the busy street na at their garden what our ठीक आंसर standing at the doorway Mrs. White was looking dash अच्छा देवाशीष क्वेश्चन सर मोना देवस्मिता नो देवाशीष सॉरी एक्चुअली देखि पारनी फोन यूज करछि ना बुझो ना साइड एक्चुअली फोन यूज करछि आ तो गोड अक्षर ठीक से देखा जाउ हैला ओके आ देवाशीष आज मते बहुत हेल्प करछि जो नहीं जेतु मु मते लागुतला कि देह तो एते खराब हे गेला कोन करी कोन नहीं तो सी मत सब आइडिया देले सर भलो हबो कोन कले बेसी भलो हबो काने पिला तो सब पढि छछन मु तो चैप्टर वाइज जदि बे आन थांती प्रोज पोएट्री स्टोरी तो आंसर थली आ तमर ग्रामर भी मध्य मु चैप्टर वाइज नै आइर प्लान थला जो प्लान ता मु तम सब शेयर भी करथि किंतु देहर अवस्था एते खराब हे गेला कि आ पीपीटी बा पीडीएफ बनेबा कि पॉसिबल हला मोदला बट तमर प्रैक्टिस दरकार अछि तो से पई मु प्लान करली कोन तमर एबे हमें सेट सब नै गसला सेट कहीं डिस्कस करबा तार एमसीक्यूज डिक्शनरी स्किल्स प्राइस ऑफ पॉल्यूशन वोकैबुलरी ए सब को हम डिस्कस करबा हैला ओके एटा कोन हो आंसर करले बहुत ला क्वेश्चन बी हेबो अच्छा एकदम ठीक बी हेबो इनटू द डार्कनेस अंधारा को अनुथले बाहर को न कि बी हेबो ठीक आंसर ओके देन नेक्स्ट कोन कहछि डिलीशियस डैश वाज सर्वड ऑन द डे ऑफ होली कम्युनियन
এটা মাই মদর চ্যাপ্टर होली कम्युनियन रे कोनटा सर्व कराउला ऑरेंज जूस एप्पल जूस लेमन जूस ना ग्रेप जूस कोडा ऑरेंज जूस ना एप्पल जूस ना लेमन जूस ना ग्रेप जूस लिपु क्वेश्चन डी हेबो देवाशीष क्वेश्चन डी दागेसन क्वेश्चन बी अच्छा आउ की कोन कहउछो ग्रेप जूस होबले ग्रेप जूस हला मन रखियो ग्रेप जूस डी हेबो ठीक आंसर तो नेक्स्ट देखो कोन कहछि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी took place Stanford University took place in Steve Jobs commencement address at dash माने commencement address जो Steve Jobs କରିଥିଲେ ଯାଇକି ये प्रोग्राम ता केबे हितला को इयर कोडा को ए बी सी और डी कोडा हो मिकु क्वेश्चन बी हो एकदम ठीक बी हो हला 2005 मसे बी दा ठीक आंसर तो आमे प्रोज पोएट्री मध्ये किछटा कर देले तो एबे ग्रामर देखिबा हला ग्रामर देखिया कोन कोन देख सबु ग्रामर पार्ट रे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कोन कहछि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन तो फर्स्ट एमसी कोन कहछि बोले देखो फर्स्ट एमसी कहला आई डैश होमवर्क बिफोर आई केम टू स्कूल आई डैश केम कहला ना आई केम टू स्कूल तो पार्ट सिंपल अछि तो सेम से हबो और डिड एक्शन कहछि डिड एक्शन कहछि तो कोन हबो को डिड एक्शन कहछि बी बोलले क्वेश्चन बी एकदम ठीक बी अछि जेतेले पास्ट रो डिड एक्शन कहथबो आ ए कहथबो कि गोटे एक्शन सरिया पूर्वरु ऑलरेडी आउट एक्शन सरी सारथला तो सेठी पास्ट परफेक्ट हबो कोन बोले सेठी पास्ट परफेक्ट हबो हैला आ एठी पुन बिफोर भी लागिछि तो जहां पर डिड एक्शन अछि कहि तो हैड गॉन देयर कोन हैड डन आई हैड डन होमवर्क बिफोर आई केम टू स्कूल तो बी हबो ठीक आंसर हैला तो नेक्स्ट देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि what does at the moment second one. What do you do at the moment? Now, what have you done at the moment? At the moment question से देखो at the moment माने कौन पूछेगा at the moment लागिला माने ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होइलो कोनटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो नहीं तो कोडा होइला स्ट्रक्चर हो सी हो ठीक आंसर then next देखो एटा कोन हबो you are eating too much you does you will be fat now you are being fat now you are fat now you are going to be fat what habo third ta ko kon habo you are eating too much you does मन रखियो बारंबार कोच बिले जदी किछ गोटे एविडेंस देथो ना जदी किछ गोटे एविडेंस देथिबो तो सेठी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो यूज हबो बट सेठी फॉर्मेट कोन हेबो बी गोइंग टू कोन लागिवो रे बी गोइंग टू लागिवो हला तापर भाबर फर्स्ट फॉर्म लागिवो एटा सब जिंस थाए बुझो नै तोरे कोन हबो डी क्वेश्चन सुबह क्वेश्चन डी एकदम ठीक डी हबो यू आर गोइंग टू बी फैट कारण एविडेंस देछि यू आर इटिंग टू मच तो बहुत सारा खाउछो बुझो नै तो कोन हबो तो जेतु गोटे प्रेजेंट एविडेंस को देखौछि मन रखियो प्रेजेंट एविडेंस देखौछि माने सेठी हम कोन करबा बी गोइंग टू यूज करबा ए रूल टा मन रखियो हैला तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि फोर्थ कोन देछि the boss I was traveling in broke down on the way अच्छा broke down in the way कोन हबो को however sorry the boss I was traveling in broke down on the way however I dashed get home in an auto rickshaw ए कहछि कोडी कोड लागियो could लागिवो ना used to लागिवो ना ought to ना was able to कोन लागिवो एटा टिकट भलसे भाबियो एटा मध्ये तो बुझे सारछि मॉडल्स पढले द बॉस वाज ट्रैवलिंग वाज कहले ना पिले तो पास्ट देखौछि आ सबडा पास्ट रे देछि प्राय जन ought to तो हबो ही नाही ought to हबो नाही एटा हम एडवाइस कोइन कोन एडवाइस कोइन used to हैबिट को देखौछि एटा हैबिट न तो बाकी रहला
ए आउ तमरा डी ए तो कोडा हो बेसिस क्वेश्चन डी हबो एकदम ठीक बेसिस डी हबो काई हबो कहि दोची एटा होची स्पेसिफिक एबिलिटी देखौची पास्ट एबिलिटी बट स्पेसिफिक एबिलिटी मन रखिबो पास्ट जदि स्पेसिफिक एबिलिटी देखौथुबो सेठी हम वाज एबल टू यूज करियो जदि से जनरल एबिलिटी हिथांदा फिर कोन हिथांदा कुड हिथांदा जदि कोइ मु छोटो बेले इंग्लिश कहि पारथि तो सेटा मोर जनरल एबिलिटी था पास्ट तो सेठी कुड लागि आई कुड स्पीक इंग्लिश बट जदि मु कहिबी ना सेदिन एनुअल फंक्शन रे मु इंग्लिश रे भाषण देई पारथि तो गोटे पर्टिकुलर दिन से कहूँ स्पेसिफिक है कहूँ मुझे तो ये कौन हम वाज एबल टू ठीक है वाज एबल हेलो ओके तो नेक्स्ट देखिबा द गवर्नमेंट डैश हाइक द बस फेयर नेक्स्ट मंथ भीटा एटा कौन हम द गवर्नमेंट डैश हाइक द बस फेयर नेक्स्ट मंथ कैन विल मस्ट ना मे कोडा हो मिठू क्वेश्चन सी हबो विल कोचो अच्छा आ कि कोन कोच आंसर दियो देखो एठी कोन कहूची ना तमरा जो जवन भाबो तो विल हबो कहि एठी पॉसिबिलिटी देखौची द गवर्नमेंट विल हाइक द बस फेयर नेक्स्ट मंथ तुम से सेंस कहि परिबो एठी मस्ट हबन देखो एक्चुअली जेहेतु मु ई क्वेश्चन थाको आनिची को गोटे सैंपल पेपर नै के आछि तो किछ क्वेश्चंस को मतलब भूलभाल टिके अछि देखो ऑप्शन गुडा को कंफ्यूजन देछि तो बुझी थाओ द गवर्नमेंट डैश हाइक द बस फेयर नेक्स्ट मंथ जदि हमें जनरल पॉसिबिलिटी पे कथा बा प्रेजेंट टाइम रो जनरल पॉसिबिलिटी पे तो सेटा हम क्या यूज करू पॉसिबिलिटी देखो तू आ जदि स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी से को तू मैं यूज करबो बुझाने तो जदि तमे एटा तो जनरल पॉसिबिलिटी न ना तो कैन हबो नै कैन हबो बाकी वाला विल आउट मे दीटा को ठीक हे परिबो बट बेसी ठीक होची डी तमे मोरल ऊपर कहबा एठी बेसी ठीक हो कोन डी ठीक हो बट सी तो ठीक हो सी मध्ये पॉसिबिलिटी देखौची द गवर्नमेंट मे हाइक द बस फेयर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट कोन नेक्स्ट मास रे गवर्नमेंट बस फेयर ता बरे दे पारे विल भी हे परिबो डी भी हे परिबो तो सी और डी ठीक हे परिबो हैला ओके तो देखो नेक्स्ट कोन कहूची क्वेश्चन नंबर देची 6 कोन कहूची देखो द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन द ऑनलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश पोस्टपोन रो माने कोन को जे भाबा ताटा यूज हो पोस्टपोन तमे हां ठीक अछि तमे सी और डी हे करो दीटा को ठीक हे करो जो क्वेश्चन तो जस्ट कहली एटा सी भी हे करो डी भी हे करो हैला माने पॉसिबिलिटी देखो तो 6 को कोन हबो द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन मीटिंग का पोस्टपोन हेला और पोस्टपोन माने हम कोन करियो माने ओडिन से डिले हेला विलंब होला तो मन रखिबो डिले पय जदन कहउछदी ओडिन से डिले हेला विलंब होला सेटा पुट ऑफ कोन हबो पुट ऑफ माने होछ कोन पोस्टपोन तो एटा हो सी सी हबो ठीक आंसर पुट ऑफ हैला एटा अच्छा एटा भूल टाइपिंग हेची जे भी क्वेश्चन तंगरा हैला अब पुट डाउन जो कहिसी पुट डाउन कहला देन कोन इता देखिबा देखो पुट ऑन माने कोन कहउछन हम पिंधिबा ओडिन से पुट ऑन कहउछन पिंधिबा मुझे वेयर समथिंग आउ जो तमर कहला पुट डाउन जदन कहउछन ता माने एथि जदन देखिबा पुट डाउन जदन कहउछन अब की को आंसर दोछो हां पुट ऑन मन सब स्कुटे जिंस तमे कोन पुट ऑन कोन कहली तम जिंस पिंधुछो हैला पुट ऑफ मान कोन कहला डिले करबो जिंस डिले हो अब पुट डाउन मान होची सपोज तमे काहू इंसल्ट करछो बा सपोज तमे काहू कोन करछो मारुछो कहि परिबा ताको हमें कहबा पुट डाउन मध्ये कहि परिबा यार बहुत सारा यूजेस हे परिबा तो एटी सीटा ठीक होची पुट ऑफ होला डिले पुडिन से डिले हबो विलंब हबो द नेक्स्ट कोन कहछि देखो 7 कोन कहछि you should continue your work the online word means कोन एटी कंटिन्यू रो माने कोन एटी कंटिन्यू रो माने कोन थिले कैरी आउट कैरी ऑन कैरी ऑफ कैरी ओवर आंसर दियो you should continue your hard work the online words means that जो ऑनलाइन वर्ड्स कंटिन्यू माने कोन हबो अच्छा पिला क्वेश्चन बी हबो
बी कैरी ऑन नो कि कैरी ऑन मतलब कोन कंटिन्यू करिवो तो एटी बी टा ठीक आंसर हो बी टा ठीक हो कैरी ऑन क्वेश्चन यू कैरी ऑन कोन जो नहीं कैरी ऑन बट जब देखियो कैरी आउट मतलब कोन कोन जिंसटा कंप्लीट हे जो कैरी आउट हला कैरी आउट कंप्लीट हे जो जिंसटा सब तुम कहचो कोन कैरी ऑन कोन कहली कैरी ऑन हम कहउछंती अरे की कोन कहचो सी ना सी हबन बिलो कैरी ओवर हबन एटी कैरी ओवर माने एटी सी डिले को देखौछ ना एटा हबन कंटिन्यू कहले हम कोन हबो बी हबो ओके नेक्स्ट देखिबा कोन कहछि दे आर हां दे आर माय फादर्स शू this statement can be changed into double questions को double question से आपने लगी ठीक है पोजीशन से बिजनेस देखो जी माय फादर शूज को जी बी ना बी एते हो वेयर किन देबो से कुछ दे आर माय फादर शू एवडा हो मो बापा जोटा तो हुज हो ना कहार कहि की हुज हो कौन तो हबनी हाउ तो हबनी वेयर भी हबनी जो नहीं हुज ठीक आंसर हो तन्मय क्वेश्चन सी हां ठीक हो सी तो हो ठीक आंसर द ओडिया भगवत दास बाय जगन्नाथ दास एटा बहुत इजी को एटा कोन द ओडिया भगवत dash by Jagannath Das wrote now has been written now is written now was written here answer को पैसिव रच ना ये कोड हबो is तो हबन कान एटा पास्ट टाइम देखो तो is हबन wrote तो हबो नहीं पैसिव रे has been written तो ठीक लागो ही नहीं तो D was written D हबो ठीक आंसर all my things dash before I entered the room all my things dash before I entered the room before लगिला ये पास्ट सिंपल लगिला कोन बोटा को अभिलिप्सा क्वेश्चन डी हबो would be stolen ना would be हबन all my things को हार्ड एटी कोन पास्ट परफेक्ट एटा पास्ट सिंपल अछि तो एपर बिफोर लाइछ दीटा एक्शन विषय कहिछ ना जेतु दीटा एक्शन विषय कहिछ तो कोटा ठीक हबो एटा was stolen को ना पास्ट परफेक्ट लागो ना कि अच्छा गोटे मिनिट रो all my things dash हां before I entered the room जेता हम क्वेश्चन before I entered the room एठी पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर बेसी ठीक लागिवो रूम को पसला पूर्व हां ऑल माय थिंग्स देखो एटा टिके स्ट्रक्चर देखो टिके स्ट्रक्चर टिके अलगा होय रहछि बिले तमे सब भाबुचो कोन तमे भाबुचो कि हार्ड लागिथिवो बिल लागि माने कोन हार्ड पर भाब था लागितो बट एटा टिके कोथो छै एक्टिव रे नाही एटा जो नहीं एक्टिव पैसिव रे पिला कंफ्यूज होन विष्णु क्वेश्चन पेपर आयो हां एटा ठीक हो सीटा ठीक हो एटी तुम ऑब्जेक्ट आको पळे अछि ना सब्जेक्ट में आगो थले हार्ड लागि थाना तापरे भाव थर्ड फॉर्म थांदा जे सीटा ठीक आंसर हो नेक्स्ट देखो कोन कहिछि इफ आई शुड सी हिम आई विल आस्क हिम टू राइट तो द यूज ऑफ इफ क्लॉज तो एटी इफ क्लॉज ता यूज हेछि एटा कोन देखौ छि देखो बोले जो माने थी कंफ्यूज हो जो एटा जो माने कंफ्यूज हो पास्ट परफेक्ट अछि एटा पास्ट परफेक्ट ही अछि बट एटी ऑब्जेक्ट आगो पळे अछि ना से पय तो पैसिव रे अछि तो तुम जानि पड़नो तो बीन का लागला हो तो ती एक्टिव पैसिव को टी होल से पड़ दो यार आंसर कहां को आई शुड डैश हिम if I should see him I will ask him to write the पिला को ए हेबो the condition B must be fulfilled कोन कहला the condition should be fulfilled और कोन कहला the condition may be fulfilled ना the condition may not be fulfilled एटा कोन देखो छी पिला क्वेश्चन डी हेबो बहुत कम पे आंसर दो के दो ना आखिर सुब्रंत क्वेश्चन सी हेबो आगु को आंसर दोचो
तमर क्वेश्चन बी हो देखो से कहछि इफ आई शुड सी हिम तो एठी पिलाटी कंफ्यूज थी सर एठी विल लागिला सर एठी शुड लागिला एटा सर ठीक अछि तो एटा ठीक अछि बुझो ना एटा गोटे एक्सेप्शन अछि तमरो तो एई केस रे हम देखिबा द कंडीशन मे बी फुलफिल बुझो ना एटा ठीक आंसर सी टा ठीक हो फुलफिल हे पारे एटा इफ आई शुड सी हिम आई विल आस्क हिम टू राइट तो एटा फुलफिल हो बोल कहछि नेक्स्ट वन कहछि इफ आई वेयर यू आई डैश माय वर्क मोर सीरियसली जदि मु तम जगह थान से कहछि एटी कोन हबो एटी वेयर लागला सबजेक्ट मूड हे गेला तो नेक्स्ट टा कोन हबो इफ आई वेयर यू आई डैश माय वर्क मोर सीरियसली अभिलेख टा क्वेश्चन सी हबो मिक्यू क्वेश्चन बी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखो पिला स्ट्रक्चर इतो वेयर लागला ना पास्ट सिंपल अछि एटा जदि इफ प्लस हमर पास्ट सिंपल अछि तो मेन टा कोत रहइबो वुड लागिबो ना वुड पर वर्ब फास्ट फॉर्म लागिबो तो बी हबो ठीक आंसर एटी बी हबो ओके तो आ किछटा क्वेश्चन अछि अच्छा एटा ठीक क्रॉप हेला वो 48 अच्छा से देखि एठी कि दिस बुक टा तम रिपोर्ट स्पीच रे कोन हेजिवो दैट बुक हेजिवो एठी ठीक से देखा जाउनी 48 एटा कोन देखो नेक्स्ट वन कहिछि माय फ्रेंड सेड टू मी माय फ्रेंड सेड टू मी वेयर आई सी यू सॉरी वेयर आई कैन सी यू the sentence becomes dash in Indian speech. Indian speech are kon habo where can I see you? My friend said to me where can I see you? तो यार कोड हबो ठीक आंसर देखो डबल चोर लागिला तो एटा तो हबो ही नहीं कोडा जदि से क्वेश्चन पचाछ ना तो टोल्ड केन देबो टोल्ड हबो नहीं तो दीटा रहिला ए और बी तो हबो ही नहीं काने टोल्ड अछि डबल चोर लागिला माने कोन है क्वेश्चन आ क्वेश्चन माने आस्क हबो तो ए दीटा सी आउट डी तो कोडा ठीक हबो सी आउट डी ठीक है कंफ्यूजिंग नहीं माने रूल्स फॉर्मेट कल ठीक है को स्टूडेंट क्वेश्चन डी हबो मिक्यू क्वेश्चन डी हबो देखो जेटा हम कहबा माय फ्रेंड आस्क्ड मी ए जंत जेटा ठीक अछि बट वेयर लागला परे कुड लागो एटा तो कुड लागिबो ना वेयर परे कोन लागिबो वेयर लागला कनेक्टिव हिसाब रे कनेक्टिव लागला परे देन ही लागि कथा जो नहीं तो सीटा भूल हो वेयर कुड भले एटा स्ट्रक्चर भूल अछि एटा ही स्ट्रक्चर ठीक अछि हैला तो डी डी हेबो ठीक आंसर तो कौन कहछि ए नॉटी बॉय डैश टू हिट मी कहला पले हिट मी तो कौन हबो सेकेंड कहछि ना वन कहछि ना टोल्ड ना आस्क्ड सेकेंड ना वन ना आस्क्ड ना टोल्ड कोन हबो मिकु क्वेश्चन डी हबो आ कि कोन कहछो तो मिकु ए भी क्वेश्चन डी भी क्वेश्चन सॉरी सॉरी केवल ए क्वेश्चन लिपु क्वेश्चन ए हां देखो हिट कहछि माने कोन बारे पे कहछि ना तो सेकेंड दोछि एटा हो ठीक आंसर तो तुम एटा मध्ये हमर सरीला कोन ग्रामर सरी गेला देन ए देखिबा ग्रुप बी अंडर रे जो अछि एमसीक्यू तमरा प्रोज रो आ पोएट्री और स्टोरी आ एथि कोला पर साइड दबा माने बहुत लंबा हे क्लास अछि आ पुणे आउथे कहि दोछि माने बहुत खराब फील होय थिले कि माने मु चैप्टर वाइज नै कैस पलेनी ग्रामर गुडा को बट तुम आसीबो याकू मध्ये प्रैक्टिस कर परबो याकू प्रैक्टिस करले मध्ये तुमको ग्रामर रो रूल गुडा बुझे देबी आ ग्रामर ऊपर मु ऑलरेडी वीडियो आनि सारछि ना तो तुम ताकू देखि बुझि परबो एटा को व्हाट किल्स टीम वर्क देखो तुम यार आंसर दे परबो तुम कोन करे पड़िबो तुमको आगे याकू पढ़िया पड़िबो काने तुमरे एग्जाम एटा पड़िबो पैसेज पढ़थिबो एमसीक्यूज पर जो नहीं एमसीक्यूज पर तुमको पैसेज पढ़िया पड़िबो तुम जो एमसीक्यू पर कोन जो पैसेज ता पढ़िबो देन ताकू देखि मध्ये तुम आंसर दे परिबो हैला याकू देखि तुम कोन करियो ना आंसर दे परिबो जोरा कि हमरो ओके
देखो याको तुम प्रथम पढ़िबो पढ़ साला परे ताबरे आंसर देबो तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट किल्स टीम वर्क अब सेम तत्वरिक आंसर देबो काहे ना एमसीक्यू ठीक अछि एमसीक्यू से पई से दोउची पैसेज ता जो ग्रुप बी रे जेटा अछि किंतु तमरो काम तुम थोड़ा पढ़ी के आंसर देबो से कहू व्हाट किल्स टीम वर्क कौन जरा की टीम वर्क कोन करे मार दिए इगोटिज्म ना साइकोपेंसी ना पॉलिटिकल एजेंडा ना वर्क एथिक कोठा बोटा जमिटू क्वेश्चन ए हेबो इगोटिज्म अच्छा जूली क्वेश्चन ए हेबो इगोटिज्म अमान्य लिपि क्वेश्चन इगोटिज्म देखो सेमती कहया अपेक्षा देखो आमे एठी देखिबा एठी देखो लास्ट लाइन कोन कहै छै देखि त तुम देखि दउछु गोटे देखो एठी तुम आंसर बाछे अछि तुम जो सब मनुष्य संग दे देला तो कोन लिखि येट अनदर स्नेक दैट किल्स टीम वर्क इज पीपल पॉलिटिकल एजेंडा तो तुम जोटा आगुर तुम जोटा माने भाबुचो सेमती संग संग आंसर दे दोन ये से पैसेज ता दोउछु ना तुम पढ़ी दबो तो पॉलिटिकल एजेंडा जन सीटा ठीक आंसर तुमको लागे सब ठीक अछि कहि किंतु तुम थोड़े पढ़ी के आंसर दबो तार मनुष्य दे दबो हैला सीटा पॉलिटिकल एजेंडा एंड व्हाट डज बीइंग अ गुड टीम प्लेयर इंप्लाई गोटे भलो टीम प्लेयर कोन इंप्लाई करे रेस्पेक्ट फॉर अदर्स टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विलिंगनेस टू गिव ऑल ऑफ द अबव एटा तो इजी लागुची ऑल ऑफ द अबव हम एक्स दे तो देखो तुमको ए बड़ा आंसर काढे अछि गोटे मिनिट यू हैव टू गॉट ओपन क्लियर एंड ऑनेस्ट अच्छा एटा गोटे आ कोन देछि एथि नेम छै परे अच्छा हम एमजे पढ़ले बे बहुत टाइम लागिवो तो एटा ऑल ऑफ द अबव हो हैला दीटा अच्छा एटा कोन कहछि इट इज इंपोर्टेंट टू वर्क ऑन डैश द एग्रीड अपॉन एस्पेक्ट इन द एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट ना हिडन एजेंडा ना टोटल एग्रीमेंट इट इज इंपोर्टेंट टू वर्क ऑन एटा तो तमे आगरो हम एटा एमसीक्यू ऊपर करिसंती बीटा इन एरियाज ऑफ कोन सॉरी बी नो एटा द एग्रीड अपॉन एस्पेक्ट हैला एटा हो ठीक आंसर एरा आंसर तमे एबळे छि पाई परियो for things to move forward it is important to work on the agreed upon aspect हैला ओके तो सेमती पोएम देखिए कोन देछि पोएम तुम कोन देला पोएम देछि साम ऑफ लाइफ से देला से साम ऑफ ऊपर ही देछि पोएम ता तो देखिबा कोन क्वेश्चन देछि एमसीक्यू सर एमसीक्यू देछि व्हाट वाज द एटा नो सॉरी पड़ेला हां इट अछि द एक्सप्रेशन thou art means this thou art माने कोन they are we are the people are na you are सी है ठीक आंसर सी you are ना यार माने कोन या माने होची you और या माने होची are एटा तुम पोएम पढ़ले को कहथि द नेक्स्ट वन कहि देखो what is not our destined end of कोन होटा एटा पोएम रो लाइन दा बोथ ऑफ द हो सी दा ठीक आंसर देन एठी देखो what are beating funeral marches এটা কোন হবো what are beating funeral marches এটা our hearts भी परिबो muffled drum भी परिबो तो सी दा ठीक आंसर हबो सी दा हैला ओके तो देखिबा स्टोरी रो अच्छा स्टोरी रो सेम देइछि तमरो देखो एठी ड्रामा टा दे देइछि तमरो ड्रामा टा पढिबो पढि साला परे तम तब तार एमसी करिवो तो देखि दो कोन देइछि दीटा ही तो पढिबो एमसी तमरो कहरा स्टोरी रो तो what was howling out the wind, the rain, the night, the storm. Mystery of the mystery on the monkey's paw. The monkey's paw. Second question there. What was howling out? The wind. Hello, wind विषय से पढ़ला. Then who greets Morris? Morris को greet कला भी. Morris को greet करला. A. Mr. White. एकदम ठीक. Mr. White. ए हैला ओके तो ठीक अछि पिले तो आज हम डिस्कस करले किछटा क्वेश्चन जोटा कि हम सेट प्रैक्टिस करले किछटा आ नेक्स्ट भी हम से बळा नेक्स्ट भी मध्ये हम से बळा तुम नै कैसी एबा सेट सब नै कैसी ताको हम डिस्कस करबा तबे सब गुडा पढाबडी करता
पुणी आउे कही दूसरी काली तो तुम जानी सारी मुझे जेहतु देहटा टे भल न लगे तो काम गुड़ा बंद होगा ना सब चैप्टर वाइज लेके आसती तुम जमी क्लोज पोएट्री स्टोरी जमी चैप्टर वाइज लेके आसती एमसीक्यूज ग्रामर से आने प्लान था तो कार्य व्यस्तता भितर आनी पारे तो आम कौन करवा एथर तुम प्राक्ट करवा ये सेट गुड़ाक है सेट गुड़ा प्राक्ट करवा से एमसीक्यूज क्लोज पोएट्री स्टोरी एमसीक्यूज देन डिक्शनरी स्किल्स देन प्राइस ऑफ पॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर ग्रामर ताकू ही सब ये करवा अच्छा जूली कहते कि सर 2 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छा मुझे तुम कही दूसरी एक्चुअली बहुत पिला पचार तो मुझे 2 मार्किया ऊपर एमसीक्यू सॉरी 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर ऊपर इंपोर्टेंट लेके आसी तो तुम पढ़ेबो द निगम एजुकेशनल एप्लिकेशन पढ़ेबो तो से कोड अच्छी मुझे तुमको कही दूसरी को जगह अच्छी गोटे देखे दूसरी को जगह अच्छी गोटे हाँ तो इंग्लिश धुरंधर को पढ़ेबो इंग्लिश धुरंधर गला पर स्टोरी पार्ट को पढ़ेबो हला स्टोरी पार्ट देखिबो एठी लिखा आइछि तो मंकी स्पर्म माय मदर हला तो माय मदर सेक्शन रे देखिबो लिखा आइछि एक्शन प्लान अंडर रे पुन देखिबो लिखा आइछि कि बोर्ड पीडीएफ लिखा आइछि हला तो बोर्ड पीडीएफ ऊपर क्लिक करियो बोर्ड पीडीएफ ऊपर क्लिक कला पर तमर टोटल सब पळे आसीबो आई होप देखा जाउ मते ठीक से एठी सब क्वेश्चन आंसर सब अछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हला आप कौन ओपन होनी तुम रजिस्टर हो पड़ो ना रजिस्टर तो फ्री अच्छी ना आराम से तुम रजिस्टर हो पड़ो ओपन कहीं होनी हम बहुत लाइक यूज करछन ओके थैंक यू ऑल पुनी काली पुनी ए भले गोटे वीडियो देके आसी हमें लाइव क्लास करबा क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करबा हैला ओके थैंक यू